Hello, dear FMG aspirants. So, roughly around 65 days are remaining for your attempt of examination. अगर इस वक्त आपके दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड्स चल रहे हैं that is it better to be a night owl or an early bird? So please be aware that these words, ये सब शब्द सिर्फ मेड स्कूल जर्नी के दौरान ड्यूरिंग योर एमबीबीएस जर्नी उसी वक्त शोभा देते हैं, नॉट एट दिस टाइम. Because when you are about to appear in an entrance examination, a licensing examination like FMG or NEET PG, your awareness should be at peak around 9 o'clock in the morning. आपको मैक्सिमली अलर्ट रहना है सुबह के 9 बजे, और उसके लिए आपको सुबह जागना पड़ेगा समवेयर अराउंड 5:30 to 6 o'clock every day, so that your body will adapt to its pattern. And your metabolism will require at least 3 hours to reach its peak, to give you that amount of required alertness. ये बात मुझे पहले भी पता था, और I used to think कि ठीक है यार, लास्ट के मंथ में कर लेंगे मैनेज, सुधार लेंगे खुद के हैबिट्स. बट जस्ट ड्यू टू दिस आई पर्सनली थिंक दैट मैं स्लो हो गया थोड़ा सा ड्यूरिंग द सेकेंड सेक्शन ऑफ माई पेपर 1 on 26th July 2025. So I'm requesting you that please be an early bird. सुबह उठिए, मस्त पढ़िए, give it your best and keep reminding yourself that this upcoming attempt is your last attempt.